उन गुणों को अपने में जागृत करते हैं, उजागर करते हैं। भगवान को खुशामदी करने की नाम स्तुति नहीं है। स्तुति करने से अपनी चेतना विकसित होती है, ये स्तुति है। फिर दूसरा है प्रार्थना। प्रार्थना माने अपने पास जो भी अपनी इच्छा है, जो भी अपना दर्द है, दुख है या आकांक्षाएं हैं, उन सब को समर्पण कर देना, ये प्रार्थना है। हाँ? अपने पास नहीं रखना, अपने मुझे ये चाहिए वो चाहिए नहीं, वो सब प्रार्थना में कर देते। ये सही है तो आप दीजिए, नहीं तो आप जाने। इस तरह से अपनी सारी चाह को समर्पण कर देना प्रार्थना है। अपना दुख को समर्पण कर देना, भाई को समर्पण। तो प्रार्थना से क्या होता है? दुख से मुक्त हो जाते हैं, भाई से मुक्त हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रमुख बात यह है, हमारे भीतर कोई कामना नहीं, इच्छाएं जिससे हमारी चेतना सिकुड़ जाता है, वो सारी इच्छाएं हम समर्पण कर देते तो हम खिल जाते हैं अंदर से। ये और तीसरा है उपासना। उपासना माने ईश्वर मुझ में है, अभी है, मेरे साथ है। ईश्वर के साथ संबंध जोड़ देना। कैसे भी संबंध जोड़ा, माता के नाम से, पिता के नाम से। ना उपासना ये करे, और वो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म सभी आकारों में, सभी गुण में, सगुण साकार रूप में विराजमान है। वही माँ है, वही मैं हूँ, वही मुझ में है, मेरे बुद्धि रूप में, मेरे मन के रूप में, मेरे शरीर के कण कण में वही है। उसके अलावा कुछ है ही नहीं। भ्रम हो रहा है किसी को, वो भ्रम के रूप में भी वही है। इस तरह से उस दैवी शक्ति को भीतर बाहर सब जगह जान लेना जीवन उत्सव बन जाता है। यही है नवरात्रि। There are three aspects. One is praises. Stuti is singing the glory of the divine. So by singing the glory, you sing glory of anybody, what happens to you? Your consciousness expands. Your consciousness gets elevated. So to elevate our consciousness, we sing the glory of divinity. That gives us immense pleasure and deep love. It kindles deep love. Now you love someone, then you keep talking about them. Like that you talk, when you praise, it kindles the love inside of you, devotion inside of you. Second is prarthana, prayer. Prayer is whatever is your need or whatever is your botheration, offering all that to the divine. So when you pray, what happens? All that you want, you have offered, you have become free from desires, from wishes. Because when you have prayed, knowing that your prayer will be granted, then will you keep the wish again? No. Imagine it's already fulfilled. When a wish is fulfilled, it's gone, no. And if it's not the right wish, then divine knows that, mother knows that it's not to be fulfilled, and she will take care of it. So offering our fear, anxiety, prayer, our desires, wishes, everything is prayer. And then upasana. There is no word for upasana in English, so we have to use the same word. Upasana is creating a relationship with the divine. Connecting with the divine in a very deep sense. You are part of it, and the divinity is part of you.
Everything is Mother Divine, the intellect, the memory, even the confusion. Even the confusion is Mother Divine. So recognizing the divinity in everything and in yourself, connecting with the divinity, establishing a deep sense of connection with it is called upasana. So these three things is together bhajan, and that is what makes life a celebration, where you are free from all that you want to be free from. And realize that you are totally dependent on the divinity. This is the way to invoke love and devotion in ourselves, and this festival is to invoke the devotion, invoke the truth that all is one and that one is everything. This truth that God is not difficult to achieve. You should not strive, strain yourself to achieve God. God is already here. So all that you need to do is in the here and now, relax. Only in deep rest, divinity dawns. Not by doing too many things. In deep rest, divinity dawns. And the Navratri is the celebration of this recognition. I am that, I am she, and she is me, and she is everything. The whole universe is all permeated by divinity. He is of divine. So, deep acceptance and total rest, deep peace. This is the way to realize God who is here and now. Yeah. But what stops us from doing that? Our mind, our desires. So, stuti, praising the divine, prarthana, offering all your desires, free from desires, and then upasana, getting connected to the divinity. Divine is anyway connected to you. You have to simply recognize the connection. And then life becomes celebration. Jai Gurudev. Then no, now life becomes a celebration. Not then, now. You have to do this now, right away, right? यच्छति